joining me, Swati Malik, spokesperson Congress, Siddharth Yadav, Bharatiya Janata Party spokesperson, Ravindra Singh Sheron, senior journalist, Amitabh Tiwari, political strategist. रविंदर जी, सबसे पहले आपके पास ही आते हैं. जरा एक चीज बताइए, अगर दोनों पार्टियों का नाम हटा दिया जाए तो दोनों ही संकल्प पत्र लगता है एक जैसे ही हैं. एक 2000 महिलाओं को दे रहा है, एक 100 रुपए और देगा, 2100 रुपए देगा महिलाओं को. एक एमएसपी दे रहा है, दूसरा भी एमएसपी दे रहा है. समझ नहीं आ रहा इसमें अलग क्या है. जी नमस्कार प्रीति जी, बिल्कुल आपने ठीक बात कही और आपने वही बात कही जो हरियाणा के एक बड़े पॉपुलर लीडर देवीलाल ने बोला था कि अगर मैनिफेस्टो का पहला पन्ना फाड़ दिया जाए तो अंतर बता नहीं पाएंगे कि भीतर क्या है. बिल्कुल आपने सही बात वही बात पकड़ी है. दोनों एक जैसे मैनिफेस्टोज हैं. जो बातें कांग्रेस ने कल की, बीजेपी ने आज की, केवल दिन का अंतर है, बाकी कुछ भी अंतर नहीं है. और खास बात देखिए कि पिछले 10 साल का अगर मैनिफेस्टो कोई पार्टी रिलीज करे तो कम से कम उसको अपना ट्रैक रिकॉर्ड जरूर बताना चाहिए, क्योंकि 10 साल कांग्रेस ने भी राज किया, 10 साल बीजेपी ने भी राज किया. उन दोनों ने उस दौरान क्या काम किया था उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती, लेकिन फ्यूचर का एक विजन बताने की कोशिश की जाती है. और उससे क्या है कि लोग हर 5 साल में कहानी बदल जाती है, लेकिन मसले आज भी वही हैं. आज भी देखिए, जब बीजेपी के विधायक और बल्कि कुछ कांग्रेस के भी प्रत्याशी जब वो अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं तो लोग उन्हीं मुद्दों पर उनको घेर रहे हैं. आज भी यही कह रहे हैं कि बिजली नहीं है, आज भी कह रहे हैं कि सड़क देखिए, आप सैनिटेशन की व्यवस्था देखिए, पानी तक नहीं आता है. आज भी वही मसले हैं. और जिस तरह का फ्री कल्चर है, फ्री बीज के बात है, ये धीरे धीरे आ रहा है. हालांकि शुरुआत इसकी बहुत पहले से हो गई थी. हरियाणा में जब चौधरी देवीलाल ने 100 रुपए वृद्धावस्था पेंशन की थी, बीजेपी ने उसका जिक्र नहीं किया. और मुझे लगता है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हरियाणा में हर चुनाव में रहा है कि कांग्रेस ने कल 6000 रुपए वृद्धावस्था पेंशन की बात की थी, बीजेपी ने उस पर कोई जिक्र नहीं किया. बीजेपी मुझे लगता है उस पर साइलेंट है. तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं. और एक देखिए अग्निवीर की, अग्निवीर बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हरियाणा में. अग्निवीर में 100% नौकरी देने की बात बीजेपी ने कही है, लेकिन उन लोगों का क्या, उन फौजी लोगों का क्या दोष है जो पूरी नौकरी करके आए, 20 साल तक जिन्होंने नौकरी की है, उनको तो अभी तक नौकरियां नहीं मिली हैं. तो जी रविंदर जी, मैं यही सवाल आपसे जरा फिर से पूछती हूँ, क्योंकि हमने वो तो टच कर लिया कि दोनों तो बिल्कुल आइडेंटिकल लगते हैं. अब इनमें जो डिफरेंसेस हैं मेन एक तो बात यही है जो 6000 वृद्ध पेंशन की बात हुई है. अगर आप सिमिलैरिटीज की बात करें कि जो हेल्थ स्कीम है जो कांग्रेस ने ऑफर की है वैसे ही बीजेपी ने ऑफर की है. जो हमने महिलाओं को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की बात हो गई वो आइडेंटिकल है. कांग्रेस कास्ट सर्वे कह रहा है वो नहीं मेंशन है बीजेपी के उसमें. तो जो डिफरेंसेस हैं अभी वो जरूर बता दीजिए. जी बिल्कुल, देखिए कास्ट सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है और कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे समय से इसको यूज कर रही है चुनाव के तौर पर. ओपीएस भी नहीं है बीजेपी के मैनिफेस्टो में, ओपीएस का जिक्र भी नहीं है. और ज्वाइनिंग का जिक्र जरूर कर रहे हैं, लेकिन सीटी जो एक बहुत बड़ा मसला है नौकरी को लेके, उसमें क्या तब्दीलियां करेंगे उस पर भी मैनिफेस्टो में जिक्र नहीं किया गया. और जबकि सीईटी से करीब 15 से 20 लाख जो युवा बच्चे हैं जिन्होंने वो एग्जाम में फॉर्म अप्लाई किया था, उसका कोई जिक्र नहीं है. कांग्रेस के मैनिफेस्टो में उसके बारे में चर्चा की गई थी, इसमें नहीं है. दूसरा, 10 लाख रुपए की योजना बीजेपी कह रही है, कांग्रेस ने इसको 25 लाख बोला है. अब 10 लाख की जो योजना है, आयुष्मान भारत की योजना तो पहले से चल रही है जिसको हरियाणा ने अडॉप्ट किया है. तो क्या उसमें कुछ दिक्कत है जो 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करनी पड़ रही है बीजेपी को? ये एक इंपॉर्टेंट है. और वृद्धावस्था पेंशन की जिक्र इसमें देखिए नहीं है. इसका जिक्र जरूर है कि 2000 रुपए हम महिलाओं को दिया जाएगा, कांग्रेस बीजेपी उससे 100 रुपए बढ़ाकर देगी. तो इस तरह की बातों का जिक्र है. फार्मर्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट है. फार्मर्स के बारे में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि उनका स्मारक बनाया जाएगा, लेकिन बीजेपी उनके स्मारक बनाने पर खामोश है. वो अभी तक एमएसपी की लीगल गारंटी की बात कर रहे हैं, लेकिन 24 फसलों में से कितनी सारी फसलें ऐसी हैं जो हरियाणा में पैदा नहीं होती है. तो उस पर भी वो क्लियर अगर बताते तो शायद. ग्रामीण क्षेत्र में जो छात्रा है उनको स्कूटर भी मिलेगा बीजेपी के उस मैनिफेस्टो में. उनको स्कूटर बिल्कुल मिलेगा, लेकिन आज भी कई महिलाएं ऐसी हरियाणा में हैं जो न्याय का इंतजार कर रही हैं, उनके बारे में भी खामोश है मैनिफेस्टो बीजेपी का. चलिए, डिफरेंसेस और जो हैं वो तो हमने बता दिए, बट आई जस्ट वांट टू ब्रिंग इन अमिताभ तिवारी इन ऑल ऑफ दिस. अमिताभ तिवारी, यू नो व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग इज ऑफ लेट इफ यू एक्चुअली लुक एट इट, you know, they'll criticize each other, they will call it freebies, they will call it populist budgets, they will call it revdi, but they're both giving it now and it's practically the same. This is what the nature of politics has become, transactional. Yeah, so essentially if you see, the manifesto promises are largely the same, and
it addresses the bigger problems. So what are the bigger problems across India or in Haryana? The bigger problems are unemployment. So both have promised central state government jobs. The bigger problem is rural distress. So both are promising a cash income support to women. Other bigger problem is agriculture distress. So MSP for crops. Other bigger problem is inflation. So you have LPG gas cylinders at 500. See, what happens is that manifesto promises, there is no significant study in India which shows that there is a correlation between voter behavior and manifesto promises. In UK this year, when the elections were held, 28% people said that their voting decision were impacted by manifesto promises. This study was done in India late back in 2016 in Kerala, where only 13% said that they would matter a lot. See, manifestos are seen differently by voters for different political parties. If you're in opposition, then it gives the voter an indication or a roadmap of what the plan of action will be. But if you're in power, then the voter is more concerned about the track record of the government over the past 5 to 10 years and how it has performed vis-a-vis the promises they made last time. If the voter is convinced that the track record of the government vis-a-vis the manifesto promises is good, then it gives confidence to the voter that these promises will be fulfilled. Now, from an opposition perspective also, only manifesto promises, so I mean, promising the moon does not help unless there is discontent among the voters. So it's an add-on factor, it's an additional factor. First, there has to be discontent or anger amongst the voters. Right. And then the manifesto promises helps them to take the... well, you are right there, because ultimately, if you look at, of any other political party in any other state, if they've come good on their manifesto, the BJP and the Congress struggling. And on each of the states, look at Karnataka, Himachal, still struggling, Swati Malik, to deliver on the promises. Preeti, the promises are being fulfilled as well. In Telangana also, the guarantees that the Congress gave have been fulfilled. Now, coming to what the manifesto... But Swati Malik, in Himachal, the people are still waiting for your OPS scheme to actually roll in its full capacity. Correct. It's under process and it will happen. It will happen. We are still talking about it. We're discussing it will happen. But let's... You already declared bankruptcy in that state? No. See, that's again... this is politics, Preeti. This is politics. There are going to be ups and downs. Even if the bankruptcy has been declared, we will overcome it, and whatever our guarantees have been will be fulfilled, as we've done so in Telangana and Karnataka. Now, coming to the Haryana manifesto, which is under discussion right now, you have very correctly said that BJP has absolutely copy-pasted what the Congress announced yesterday. You did not use these words. You said they're identical rather. BJP just increased, twerked it a little bit. Let's put it that way. But if you and the voters here are going to look at who has done what. Sheron ji ने बहुत अच्छे से बोला कि अभी voters देखेंगे किसने क्या काम किया है. Who should the voter believe? Now the voter will believe when you put up the mark sheet, compare the two mark sheets of what BJP has done in last 10 years and what the Congress has done before that. Not even, obviously, we've not been there for 10 years, the last 10 years. So when you compare the two mark sheets, that is what the people, the voters of Haryana will see as what they also saw in the central elections. And just to make it a little convenient for your viewers, of course, there are a lot of charts and comparisons. But when we come down to even, for example, education. Now, education, there's not a single new university, national university, that has been opened or inaugurated by the BJP in last 10 years in Haryana. You talk about teachers. There's zero JBT appointments rather last 10 years. Whereas while Congress was there, it was 25,000. There are 2 lakh vacant positions, vacant posts when it comes to Haryana. There was also a massive scam where the teachers hiring was concerned. You want me to give a list of the scams? Parchies come from the state of Haryana only. No, Preeti, but what happened in those scams? What did the BJP, when the BJP took over, did they arrest anybody? If they were arrested, what has been the result of those scams? And there's a list of about 35 scams which have happened in Haryana in the last 10 years. It is very easy for BJP to say, like, Mr. Nanda... just hold that thought. I want to bring in Siddharth Yadav there. Siddharth Yadav, the fact is, you can criticize the Congress. You can take it on multiple aspects. But it's a little rich, Siddharth Yadav, if you are going to take on the Congress on the basis of their manifesto. Because अगर वो रेवड़ी बेच रहे हैं, तो आप गज्जक बेच रहे हैं. एक ही चीज है, sir.
बिल्कुल भी एक चीज नहीं है प्रीति. And I think there's a difference in what we should call the documents that have also been laid by both the parties, because theirs is a manifesto and ours is a Sankalp Patra. And there's a very big difference. Congress party over the years has downgraded the sanctity of the manifesto of the Sankalp Patra that has to be given to the states, has to be dedicated to the people. We have seen what is happening in Himachal. We are seeing what is happening in Karnataka. We are seeing what is happening for the promises that the Congress party does. Now the Congress spokesperson here says कि वो तो politics है. वो politics नहीं, वो misgovernance है. When you don't have the budgetary allocation, when you don't have a clear-cut plan of how you're going to implement things, and then you make any promises, this is what happens, and that is what they're trying to do in Haryana as well. But before I make my two crisp points, I wish to play a video of the Asand candidate Shamsher Gogi of what he's saying here. जो बाहर से हमारी मदद में आ रहे भाईचारे ने भी करेंगे और पहले अपना घर तो भरेंगे ही इज मेकिंग अ स्टेटमेंट कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम अपना घर तो भरेंगे. दिस वाज द चाल चरित्र एंड चेहरा ऑफ द कांग्रेस पार्टी ओवर द इयर्स. इफ यू if you want to compare the mark sheets of the two governments that have happened, 10 years the Congress party ruled Haryana, 10 years we have ruled Haryana. What was the per capita income then? It was something over 1,50,000. What is it now? Over 3 lakhs. How many unicorns were there in Haryana? 0. How many are there today? More than 10. So when such a things happen, how many sarkari naukris were there? 86,000 in 10 years. How many happened now? 1,46,000. So there's a clear, stark difference of what, a rule of governance has been, which was dedicated to the people of Haryana by the BJP governance in 10 years, has brought prosperity in the state of Haryana. Their Kharchi Parchi model had only brought tyranny on the people of Haryana. They had seen the misrule. They had seen the mismanagement. And today, the Sankalp Patra of the Bharatiya Janata Party is the clear-cut plan of what is going to happen in the next 5 years. I'll tell you why it's a little rich coming from you. Because, yes, it's bizarre that the Congress hasn't been able to deliver on its promises in certain states, like the state of Himachal, not completed, where the old pension scheme is concerned. But it inherited the debt, no, Siddharth Yadav? 90% of Himachal's debt has been inherited by your political party who was governing the state of Himachal Pradesh. Number one. Number two, you talk about misgovernance and debt. Ladli Behna Yojana has put the state of Madhya Pradesh in a debt of 4 lakh crores. 4 lakh crores, Siddharth Yadav. Preeti, I absolutely do not agree with both your points. Number one, the first point that you raise about the debt inheritance, this is the same point which is being raised, the kind of face saving that is being trying to be done by the Congress Chief Minister Sukhoji. But you should listen to the debates of what is happening in Vidhan Sabha. The mismanagement of Congress party after they have taken over, the over promises that they had done, the attempts that they tried to fulfill their promises, the manifesto that nobody's they denying that. and the failed Nobody's denying that has brought this to them. But nobody's denying that. But I'm saying you're none the richer. No high moral ground. You're none the richer. You are none the richer. It's exactly the same. Preeti. It can't be a pot calling the kettle black can't happen. Madhya Pradesh is in debt because you made promises which you struggle to keep. I'm very sorry, but we are. We are, because when we make you the promise choose to of think so, but okay, as somebody who's on the outside, I just take 10 seconds. When we promise to do a Ladli Behna Yojana, we do it before the elections. We prove it to the people that we can do it from our budget. We are unlike Karnataka. Do you know how much you raised? No, but you did not take it from the budget. We are unlike Karnataka. Let me no, one second, Siddharth. You raised the money of Madhya Pradesh 1 month before elections. Preeti, please let me complete. We are unlike Karnataka, which says that we will decrease the fares in buses, but we'll increase the overall fares. We'll increase the prices of petrol and diesel. We'll decrease the prices of liquor. But everything in the state is going to get expensive. We are Mr. unlike Yadav, Congress in your Himachal charges Pradesh, on the Congress are correct, but your defense for your own party is not. Okay, I just want to quickly cut across to the other two panelists that I have. Ravindra Singh Sheron, आप कोई point raise करना चाह रहे थे, आपने अपनी उंगली उठाई थी, बताइए. देखिए, मैं तो यही कह रहा हूँ प्रीति जी कि मैनिफेस्टोज लेके आना इम्पोर्टेंट फैक्टर है, लेकिन कितने लोगों तक इन पार्टीज का मैनिफेस्टो पहुंचता है वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है. और सिद्धार्थ भाई की एक बात से मैं बड़ा सहमत हूं. इन्होंने कहा कि असंध के विधायक ने जो बात बोली, सर आप नीरज को क्यों भूल गए? नीरज शर्मा एनआईटी, उन्होंने कितनी अच्छी बात बोली है. उन्होंने कहा कि 50-50 लोगों वोट दीजिए, हम आपको नौकरी देंगे. आप अगर
चुनाव मैदान में आ रहे हैं तो उन पार्टीज को क्रिटिसाइज कीजिए, कांग्रेस को खुल के क्यों नहीं क्रिटिसाइज कर पा रहे हैं आप लोग? ये कितना खराब स्टेटमेंट है नीरज शर्मा का, जो एमएलए है कांग्रेस पार्टी से। उन्होंने बोला 50 वोट के बदले में हम लोग एक नौकरी देंगे। हरियाणा जो इतने बड़े एक क्राइसिस से गुजर रहा है, उसमें अगर आपकी पार्टी कांग्रेस को नहीं घेर पाएगी तो हम लोग आम आदमी को कैसे पता लगेगा कि सही पार्टी कौन सी है? नहीं शेरान जी, बिल्कुल आपने- घेरेंगे, आपकी अपेक्षाओं पे खड़े होंगे। अच्छा, एक बात और बता दीजिए सिद्धार्थ भाई, हरियाणा में सरकार कौन सी है? कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं कि मुख्यमंत्री हैं? हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और वो सरकार है जो हरियाणा के अंदर नहीं, हरियाणा के हित का मुख्यमंत्री काम कौन कर है रही भाई साहब? मुख्यमंत्री हैं कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं? उसका कोई नोटिफिकेशन आया क्या आपके पास? आपके पास अरे शिवराज मुख्यमंत्री जी, का इस्तीफा है क्या? आपको अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता तो नेशनल टेलीविजन का समय मैं कैसे बर्बाद करूं बताने सर में? मुझे तो मैं पता, माफी आपको चाहूंगा। कानून नहीं पता भाई साहब, आपको कानून नहीं पता। मुझे पता कानून है। बिल्कुल पता है। हरियाणा तो के बता अंदर दीजिए चुने हुए क्या है? मुख्यमंत्री हैं सिद्धार्थ भाई जो बताइए जिनको ना। विधायकों ने चुना सिद्धार्थ है, भाई, और जो हरियाणा में विधानसभा नायब सिंह भंग सैनी हो गई, हरियाणा तो के उसमें मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री है कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ चलिए, बस। आप बता दीजिए, शरण जी, विधानसभा तो भंग हो गई। ओके चलिए, ओके, लेट्स नॉट डाइवर्ट, अरे, लेट्स शिवराज जी, आई वांट अच्छा टू ब्रिंग बाकी जगहों पे क्या होता है जब विधानसभा भंग होती है? कमाल सर, बात आप कर रहे मुझे हैं शिवराज बताइए ना, जी। मेरे सब को कुछ बताइए आपको ना, भाजपा के लिए Amitabh दिखेगा। Tiwari for a final word. सरकार Okay, में one थोड़ी final बैठा। word to Amitabh Tiwari before we go into a quick break. Amitabh Tiwari, you know, the manifestos aside, and you are right where you began, because it reflects the issues of Haryana. Unemployment plaguing the state is the number one issue, and you can see that in kind of the doles, one can say, which have been handouts, which are being handed out. The question, Amitabh Tiwari, is, do people really look at manifestos? Because ultimately we haven't seen that happen in any state. See, people are increasing looking at manifestos, but that's not the only influencing factor. Now you talked about freebies. Now both the parties have made a promise of 2,000 rupees to women per month. That is 24,000 rupees, which means even if it is paid to 1 crore women, is like 24,000 crores, which is 15% of Haryana's expenditure budget. So the election commission here has to come with guidelines as to how these manifesto promises are going to be fulfilled. Either they will have to take debt of 24,000 crores, or they have to reduce expenditure of other heads. There is no other way that this additional expenditure can be done. And this is where I think the case was in the Supreme Court. And even people then tend to take it lightly, because now everybody is promising this 2,000, 3,000 rupees, and we are struggling. The state governments are struggling to fulfill most of these promises. You're right there, the culture of freebies, it was questioned by the top court of the country as well, but we're going to keep a keen eye on developments after the manifestos. Is it going to be bought by the people of Haryana, and if so, which political party? Because they mirror and look exactly the same, not much change, but ultimately offering a populist promise after promise, and the cost of that fairly high.